be here any minute. I can't see him though. All right, let me just check. Okay, great. So we are expecting Chiranjeevi as well. A couple of minutes, mein. Chiranjeevi is super duper senior ex-place commer from IIM Indore. Let me just check. Hi, Chiranjeevi, are you live? Can you hear us? Let's just check. Okay, lovely. Last year का IIM Indore session was lasted till 2 AM in the night. हम लोग बातें करते रहे, बहुत ही मजा आया. And nevertheless, so बहुत ही बढ़िया. Super. तो मजे करेंगे यार. Disclaimer before we get started. पहली बात तो भाई super duper congratulations for getting an IIM Indore call. It's a great call. Turn the world upside down to convert your calls for sure. एंड और ये IIM टैग के अंदर ब्लैक की जो ये अलग लेवल है. मैं हमेशा बोलता हूँ बहुत शर्म आएगी अगर IIM इंदौर कॉल और बैठे हो उदयपुर के अंदर. बहुत शर्म आएगी. इसलिए दिस इज आर इनिशिएटिव्स टू हेल्प यू गाइस फॉर श्योर. थोड़ी देर के लिए लाइव भी है तो वील टॉक जो रिक्वायर्ड है एंड सीनियर्स ऑल्सो एंड देन वी कैन गो अनसेंसर्ड आफ्टर नेक्स्ट 20 minutes. जो IIM ABC कॉल्स अटेंड कर चुके हैं उनको पता है कि हाउ इट वर्क्स. And then you guys can ask me anything under the sun. Of course, more than happy to you to answer questions. Disclaimer: I'm going to be very loyal to these sessions. Okay, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर अहमदाबाद का चलता है I'm going to be loyal to अहमदाबाद. Don't bring in Bangalore there. Bangalore चल रहा है तो हम Bangalore के गुणगान गाएंगे. अगर इंदौर चल रहा है तो comparison वगैरह then अभी मत avoid करो. कंपैरिजन जब तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा आई मेक यू मीट योर सीनियर्स अगेन फ्रॉम IIM इंदौर फ्रॉम FMS फॉर MD गुड़गांव. छोड़ना IIM नहीं छोड़ना, जाना ही जाना है, वो बहुत दूर की बात है. अभी तो हमारे हाथ में भी नहीं है. पहले तो तुम कन्वर्ट करोगे और डोंट ब्रिंग इन एनी नेगेटिव थॉट्स इन योर हेड ये हो जाएगा या एनी कंफ्यूजन इन योर हेड. पहले सारे कन्वर्ट करने हैं. 9 कॉल आई 9 के 9 कन्वर्ट, 8 कॉल आई 8 के 8 कन्वर्ट. ये भी तुम सीवी पॉइंटर लिख सकते हो. बहुत ही बढ़िया. सुपर. पहले तो भाई क्विक चेक करते हैं हम लोग. एक वेलकम गाइस, वेलकम गौरव दास अगेन एंड वेलकम ओंकार साहू. कैटकिंग फैमिली के सीनियर्स आए तुम्हारे को मिलने के लिए. एंड द मोर इंपॉर्टेंट स्टफ इज विल हैव टू मोर फोक्स ज्वाइनिंग इन कपल ऑफ मिनट. वन इज सुपर डुपर सीनियर जो 3 साल से कैटकिंग फैमिली का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हु इज बीन हेल्पिंग अस इन कन्वर्टिंग योर कॉल्स एज वेल. ठीक है भाई. ओके, क्विक चेक ऑन द चैट. General category, at what percentile you guys have got your calls? I do this check always. So just type in general, non-engineer, female, Jeff, itna percentile. Category student will come to that on the chat as well. हाँ भाई फटाफट. हाँ भाई जल्दी फटाफट. Okay. General non-engineer female 97 percentile. Kia, very nice. Okay. Akriti 99.04 general. Okay. 97 पे Jeff को call आ रही. Very nice. Rest of the folks. Gem वाली जनता भी. Okay. बाकी general non-engineer male 99.48. Very nice. Okay. Vaibhavi 99.52, 99.39, all right, 90.98. Vaibhav, very good. All right, so 99.97, all right, okay. Gem बाकी कहाँ गए भाई? जनरल नॉन इंजीनियर मेल कहाँ है? एक भी नहीं दिखा. हाँ, तनिष्क देखा एक. ओके, लवली. 99.8, 98, 90.8 gem, all right. So I can clearly see that 97.23 in our discussions is the last general non-engineer female so far who has got a call. एंड रेस्ट जेम तो पता ही है 99 के ऊपर ही हैं भाई सारे. तो नेवरदलेस सुपर डुपर कांग्रेट्स. ऑलराइट, ग्रेट. बाकी भाई कैटेगरी स्टूडेंट जस्ट टाइप इन SC ST OBC. आई जस्ट टॉक अबाउट योर परसेंटाइल्स एज वेल फटाफट. ऑलराइट, क्या है तुम्हारा? 9.57 OBC, 97.96 OBC मेल, 93.41 OBC. ओके, लवली. फीमेल 88.80 पे कॉल है. ओके पांड्या, कन्वर्ट कर भाई. EWS नॉन इंजीनियर फीमेल को 88% पे IIM इंदौर कॉल कर रहा है. वेरी नाइस. SC वर्किंग से क्या पांड्या हिराल आपका? SC 94, 99.04, 98, 94, 94. ऑलराइट, ओके. नहीं, ओके, लवली. फ्रेशर को बहुत ही बढ़िया. ऑलराइट, दिस इज क्रेजी. ओके, ग्रेट. पीपल आर सेंडिंग मी मैसेजेस पर्सनली. देयर इज एन एवरीवन ऑप्शन. एवरीवन पे करो, तुम्हारा चैट के अंदर तभी आएगा, नहीं तो वो मेरे DM में साइड में रह जाता है. ओके आर्यन, वेरी नाइस. ओके, सुपर. और नो गैप सर, गैप है कि नहीं है? नो गैप सर, क्या लिख रहे हैं भाई? ओके, बहुत बढ़िया. Thank you everyone for clarifying this. Great, and congrats once again for getting the call. Let's talk to your seniors and do a small introduction session with them. और एजेंडा रहेगा ये कि हम क्या क्या चीजें होती हैं कॉलेजेस के अंदर और क्या क्या हम बेटर कर सकते हैं in this coming days before your interview as well. Super, let's begin यार. Who wants to go first? Gaurav, you want to go first with a quick introduction? It's going to be really helpful. Yes, sir. As you know, sir, I'm a GEM fresher and I did my BTech in CSE. And then I entered IIM Indore for their flagship PG program. I have a keen interest in operations and I'm choosing my electives in that direction and I've done certain certification in that domain, which helps you to give up if you have done so in your. Yeah.
सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यार गौरव, थोड़ा सा नेटवर्क चॉपी है, आई थिंक माइक्रोफोन्स चॉपी है थोड़ा, एक बार बता दे क्या गड़बड़ हो रही है, इफ यू कैन जस्ट चेक इट आउट और मे बी यू कैन Okay, sir, स्विच ऑफ. I'll come back. या Let me check. कम बैक, विल कम बैक टू यू. ओके ओंकार, गो अहेड मैन, स्मॉल इंट्रोडक्शन वुड बी हेल्पफुल. Hi everyone, I'm Omkar. I am also a fresher and I joined just after my engineering. And I was part of the CATKing family during my summer internships. So I was a product manager intern there. So my domain of expertise is IT, product management, and that is my UG background as well. And it's really nice that 2 years have passed away like a flash. It's on the other side. I'm so sure. I'm so sure. Great. Thanks for coming back. All right. Let me just check quickly. Abhishek, are you live? Chiranjeevi from I'm Indore. Are you guys, can you guys hear me? If yes, just unmute yourself. Okay. No, we can't hear them. Yes, I can hear you. ओहो, दोनों आ गए. कहाँ भाई, कहाँ है, दिख नहीं रहा था मुझे. चल इंट्रो दे भाई अपना. हाँ मैं अभिषेक तू सर मेरे को तो इंट्रो क्या, तेरा जो तू बोलने वाला उससे ज्यादा मुझे तेरे बारे में पता है. बट तू बोल. हाँ. Hello everyone. So I'm Abhishek. I'm currently in my final semester here at IIM Indore. And I'm an engineer. और क्या बताऊं sir? My summer internship was at Bain. Yeah, I think that's it. बहुत ही बढ़िया. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. एंड ही वाज अ कैट किंग फैमिली का पार्ट था, तो कब वो भी बता थोड़ा सा. हाँ, yes sir. So I was with CATKing. हम्म. Yes जल्दी sir. जल्दी रख ले साइड पे भाई. भाई बाय द वे, जो तुम डैशबोर्ड में गलतियां निकाल रहे हो, जो डैशबोर्ड में तुम्हें इशू आया था, आधा ओंकार ने बनाया और अभिषेक ने उसकी फाउंडेशन करी है. आज तक ठीक नहीं हुआ अभिषेक तेरा बनाया डैशबोर्ड. क्या कर रहा है अरे सर, तू? नॉर्मली तो ठीक ही चलता है सर. ग्रेट. थैंक्स फॉर व्हाटएवर यू डूइंग. बहुत ही बढ़िया. ओ चिरंजीवी इज हियर. बहुत ही बढ़िया भाई. इसका इंट्रोडक्शन मैं शुरू करता हूँ. प्लेस कॉमर रह चुके हैं भाई हमारे. एंड आई एम इंदौर 2024 बैच, 2023 बैच, मैं तो भूल गया यार. 2023 बैच. बहुत ही बढ़िया. सुपर यार. ग्रेट. सो तो अभिषेक, यू विल बी ग्रेजुएटिंग 2025 2026 दिस ईयर, करेक्ट? Yes sir. बहुत ही बढ़िया. ग्रेट. एंड हाउ अबाउट यू, द अदर टू फोक्स, व्हेन आर यू गाइस ग्रेजुएटिंग? This year, ओंकार. 26. अच्छा 26. 20. ओह अच्छा, अभिषेक और तू बैचमेट्स हैं. ग्रेट. एंड चौथा किधर गया हमारा? हाँ भाई तेरा, कैन यू गाइस हियर अस? गौरव कहाँ गया? गौरव कैन हियर मी? Corrupt dropped off. Gaurav, I think he's checking his internet. Nevertheless, okay, let's begin. Welcome again. तो भाई यहाँ पे अलग अलग जनरेशन के तुम्हारे सीनियर्स बैठे हुए हैं. So first 20 minutes we're going to talk general ज्ञान, and then we're going to open house and have discussions for sure. बहुत ही मजा आएगा. एंड ऑफ द डे हमारा रिचुअल चलता है. व्हेन एवरीबॉडी इज गॉन, व्हाट वी गोना डू इज यू गोना गिव सम ज्ञान टू द कैट 2026 जनता ऑन कैट प्रिपरेशन. वो 1 मिनट के लिए चलता है. और इट्स योर नेम टू फेम. जस्ट गिव देम. Of course, we post them on YouTube once you guys convert your calls for sure. वो एंड में करेंगे अपन, नियरली 11:30-12 बजे के आसपास. उसके बारे में बात करेंगे. एजेंडा इज टू हेल्प यू कन्वर्ट योर कॉल्स, सो लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स. लेट्स गो. अभिषेक, यू वांट टू क्विकली स्टार्ट विद हाउ वाज योर IIM इंदौर का इंटरव्यू? And if you want to talk about that, that's going to be great help. And a quick about profile: he's again an engineer, again a 99x percentile odd. And yeah, so you had work experience as well, Abhishek? Yes sir. 1 year work experience. Okay, lovely. Let's go. Okay. So I think what was asked in my interview, so I mean it's a general trend. So normally you'll see like a lot of things being asked around your graduation. So whatever you're studying in your graduation, irrespective if you have work experience or you don't have work experience, you can always expect a lot of questions coming from there. In my case, there was like a fair amount of questions that were around graduation. Then there were also some. So I was asked to draw a few graphs. So for example, you should be aware of what a graph of log x look like, or what a graph of x square minus something looks like. That was there. Except for this, you can also always expect fair bit of GK and current affairs. I remember at the time I was asked a bunch of stuff from the Olympics that were going to happen. So I think yeah, that was like the general trend. So it was not so though it was like a bit inclined towards the graduation side, but you can expect a flavor of a number of different things in interview. That's great. And what are the quick no-nos, like यार ये तो पक्का मत करना, इसलिए कई लोग अपना, तेरे जो बैचमेट्स होंगे या जो व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग एडिट थे उसके अंदर के, यार उनके रिजेक्ट हो गए थे क्या? ऐसी चीज है, व्हाट विल हेल्प देम नोइंग I दैट? think
I think I remember this guy who went to the interview just with me, and I think he had 3 years of work experience, and he was asked questions from like 5, 6 different graduation subject of his. So when I'm saying that prepare for your graduation subject, it's like do not just brush upon like one or two of it, like top subject, but probably touch upon what are, let's say if I'm an engineer, I need to be aware of what is storm, what is storm, and whatever like what's mechanics and stuff. So whatever are like the broader obvious fields, you just make sure you have that covered. Having said that, I also have observed that I think what has happened this year is that I think Amandor is not giving as much weightage in for like the initial shortlisting to graduation and like the 12th score like it is historically done. So I'm not really sure how this might pan out, but again, if you look at the trends, graduation is again something you should be focusing on. That's lovely. Thanks, Abhishek. Okay, I'm going to come back to you in a minute. Abhishek, और अपने we'll talk a little bit more about why I'm Indore जो questions पूछने so that they can have a framed answer in couple of more minutes. Let's go to Chiranjeevi. Chiranjeevi साहब senior है भाई CATKing family. I met him once. He was hanging out in Alibag. भाई place कॉमर था तो बहुत chill किया इसने कॉलेज के अंदर अंदर ही हाँ. तो any which ways बहुत ही दिल के close है and he's helped. I think Abhishek तेरे session के अंदर Chiranjeevi was there to help you guys convert your Yeah, yeah. calls. Yeah, I Okay, was Yes, lovely. sir. thinking Abhishek is graduated, but yeah, he's still in the final semester. But Yeah, yeah, so I'm going to graduate this semester after this semester. yeah. So बहुत ही बढ़िया. it's again very glad to meet all of you. So to be very honest, it's been like 5 years, like 5.5 years when I attended the interview. So I might not recall the exact parameters of on what basis I was interviewed upon, but I can align on the same lines on what Abhishek just mentioned. Focus on your graduation subject. So I was a civil engineer, and not general engineer male, but it was EWS engineer and male and civil engineering. Uh, and Lucknow had my best call, but in Indore specifically, they had asked around, grilled around the graduation subjects. For example, for civil engineering, you can say that Indore is built on a mountain. So the basic question is how to build buildings and everything on a mountain, and that's similar lines. My graduation friend from mechanical as well got a question, like it's a case study type of answer where you can say that how to build and what should be the foundation type, and they map professors very well. So if you are a civil engineer or a mechanical or even any kind of engineer, then they will map you to a professor who has an engineering background or an alumni who has an engineering background, so that they can ask you proper questions from your background. Awesome. For WorkX people, there will be again questions on graduation, very less on work experience. But if the professor knows about your work, knows about your work experience, less chance on the IT field. But if you are like non-engineer, if you are a commerce student, if you are an economics student, then my friends who joined IIM Indore with me, they did ask a lot of questions on their work experience and as well as graduation on commerce subjects, on economic subjects, but because that's what you are going to study inside MBA, right? So that going to carry forward and prepare well on the SOP questions, right? What was that, Abhishek? The 30 NPAT questions, the 30-40 questions, I think that should be with you already on the CATKing dashboard, right? So prepare the NPAT questions very well. They are going to ask around whether you have done this, whether you have done that, or tell us about a time where you have managed a team, or why MBA. Like talk us around your background. So, for example, they asked me a lot of questions around my hometown. It's very near to like it's in a coastal town in Odisha. So they asked me around, tell us like 5 things around your hometown. So it's just like checking that to go to the graduation subject, then they will grill on you on the graduation subject till the interview gets over. That's lovely. That's lovely. And how was the place combat experience here? You were in the part of the place com. So how was place com when I'm Indore at your times?
Yeah, it has been changed a lot over the years. I've been interacting with like my juniors in the Placecom as well. But at that point in time, it was a lot more grilling. Obviously, you don't get any time to do all other things that you had thought before the MBA. But at the same point in time, you make a lot of connections. You make a lot of like good contact, which you can reach out even after graduating like 4 5 years now. But I can still I reach out to like one or two HRs who are my friends, and we go out, have a dinner. So you can do that at any point in time in your career. So it gives you a milestone. It gives you a confidence that you can do what you do are going to do in a corporate environment after your MBA ends. So it's definitely a good opportunity, but at the same point in time, you're going to cost your campus life. Because when I visited the campus in 2025, I had thought about it, because if I would not have been in Placecom, I might have done a lot more activities than what I used to do. राइट, दैट्स अ रिग्रेट ऑफ एवरी प्लेस कॉमर। एनी विच चलो वो बातें बाद में करेंगे। प्लेस कॉम ज्वाइन करनी नहीं करनी वो एक अलग क्राइटेरिया रहता है, कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, अच्छी बुरी बातें, दैट विल डू इन कन्वर्ट सेशन एज वेल। चिरंजीवी को दोबारा बुलाएंगे। तो भाई पहले तो प्लेज लिखो जरा चैट के अंदर, यू ब्लडी गोना कन्वर्ट दिस कॉल। भाई लिखो जरा प्लेज। ये प्लेज आई एम अहमदाबाद सेशन के अंदर हुई थी, आई एम बैंगलोर के अंदर हुई थी। फटाफट लिखो प्लेज, प्ले PLEDG, फटाफट। ऑलराइट सुपर, ये होना ही चाहिए। And the power of the session, Chiranjeevi was on that side helping people. अभिषेक उसके सेशन में, यही सेशन में बैठा था, और तुम आज कन्वर्ट करके बैठे हो। तुम्हारा डैशबोर्ड बनाने वाला ओंकार वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, और डैशबोर्ड की जिसने नींव पत्थर रखा था अभिषेक, वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है। एंड बोथ हैव स्पेंट 1 year in CATKing and other guy spent 2 months in CATKing for the leadership program. तो लाइफ क्या, और चिरंजीवी प्लेस कॉमर भी है, 4 साल पहले ग्रेजुएट हो चुका है, पार्ट ऑफ CATKing फैमिली 2022 2021, एंड तब से हेल्प कर रहा है स्टूडेंट्स को। तो लाइफ इससे ज्यादा ज्ञान नहीं मिल सकता, जो मिल रहा है ये हुई ना भाई, प्लेज टू कन्वर्ट माय कॉल। बहुत बढ़िया। वन स्मॉल चेक, स्मॉल मिड ब्रेक बिफोर आई गो टू गौरव। यार किसका बेस्ट कॉल है ये बताओ जरा। किस किस का बेस्ट कॉल? जस्ट टाइप इन बेस्ट कॉल, बेस्ट कॉल, बेस्ट कॉल, जस्ट टाइप इन बेस्ट बेस्ट बेस्ट। ओके, कि भाई इसके ऊपर तो कोई आया नहीं, बस यही है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है? और राइट हैं, 2 3 लोग हैं भाई। लाइक टाइप करो बेस्ट। ओके, ओ तेरी राज का बेस्ट है, कुणाल। ओके, इसके ऊपर कोई नहीं है, चलो LNI दोनों दोनों बेस्ट मानते हैं इस सेशन के अंदर। ओके, लखनऊ बट ABM है। ओके, बेस्ट कॉल ये तुम्हारा। भाई तुम तो पढ़ लेना जरा बैठ के। हाँ, इसके नीचे कहाँ जाओगे? कोई कोड जाओगे, इंदौर जाओगे, पता नहीं और क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा। तनिष्क का बेस्ट है। तो आई डू अ सेपरेट सेशन विद यू गाइस वेयर पीपल ओनली वन कॉल्स, उनके साथ ही सेशन करेंगे, सो दैट तुम्हारा तो कन्वर्ट होना ही चाहिए ऑफ कोर्स, बाकियों का भी हो तो बढ़िया बात है। ओके गौरव, लेट्स गो टू क्विकली यार। गौरव क्या सीन है यार? हाउ वाज योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? इफ यू वांट क्विकली गो टू दैट, देन आई एम गोना रीड थ्रू सम ऑफ द Uh, डॉकेट्स, yes, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। One of या, the funny experience was it was on 14th of Feb, the morning only, अच्छा। and the interviews greeted me with Happy Valentine's Day, हम्म and they started talking in my native language because one of the interviewers were from my native town, my city. हम्म हम्म So I controlled the urge to not speak in my native language and speak in English only. हम्म And they started asking questions from some subjects that we avoid in graduation. Since I am a हम्म computer science engineer, so there are some subjects like parts of algorithms that we don't study or leave it, but they started asking from there. And what IIM Indore is known for, they do a good cop, bad cop thing. One हम्म interviewer plays that as a good cop and tries to be your friend, and another one grills you. And another thing is that around your hometown, there will be certain things that you must know, like means high court, which high court is of which state and all. Union territories have which high court, like this question. And if you are able to drive your interview towards your interest, like I drove towards my, means I have a passion for playing football and watching football. So I tried to drive it around that, and around 4 to 5 minutes we spoke about football only. One of the profs had done their PhD in Italy, so we are talking about Italian football and all. Means if you are able to tap on their nerves, correct nerves, you will sail through. And for non-engineer uh, people, they mostly focus on asking integration differentiation questions. हम्म And Indore has that extempo also. हम्म
ओके ऑसम। यार एक बात बताओ, ये क्यों पूछ रहे हैं इतना मैथ्स नॉन इंजीनियर्स को? कैलकाटा में तो पूरे पूरे मतलब थ्योरम ड्राइव हो रही हैं, बट व्हाई डू यू थिंक दैट नॉन इंजीनियर्स शुड बी? और भाई चैट के अंदर टाइप करो नॉन नॉन नॉन, जो जो नॉन इंजीनियर्स है, क्यों मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट है? हाँ भाई, प्लेस कॉमर्स से सुनते हैं। चिरंजीवी, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? So again, first of all, that also plays out on how much call that you guys are receiving. That lines from starts from A, B, C, FMS, and Lucknow as well, Excel, right? So that's how the panned out becomes. And if you look at the criteria specifically, ABC focuses more on the engineer side, right? So then you all are at 99 level. If I talk about general engineer male or engineer female, so then that non-engineer batch who is like higher than 99 but not general engineer male, so that group is also at Indore level or Kozhikode level. And Kozhikode of course focuses more on CA and as well as girls, right? So and then Indore is known for that kind of category. So another aspect is also like if you look at the professors ratio as well, or the all the subjects that they offer in terms of electives to choose from, they are more of economics, more of finance, like a lot of not tech focus, like the professors are from that particular side. So that is also plays a very good aspects of selecting more non-engineers than engineers. But at the same point in time, I will say that if you're an engineer, if you are getting into IIM in the a lot of my engineering friends have done definitely better than the non-engineer friends. That's very subjective. So no need to worry about that. That if I am an engineer, I'll not get into IIM Indore. If you are giving a good interview, then you will definitely try to convert all the calls. So that being said, which Sumit was just saying, or also was just saying that if it is your one of your calls converted, then if you have two calls, you can choose any one of them, right? That's a good problem to have, but don't think about that I am this category, I won't get chosen. बहुत बढ़िया, great, thanks for that. Okay, I'll just spend like quickly 1 minute, then we're going to do an open house. Last 1 minute for the people who are listening to live. We're going to close session because we're going to talk a little bit insider information as well. और जिनके पास नहीं है अभी तक WhatsApp ग्रुप पे added, नीचे आपको लिंक मिलेगा, you can get added as well. So भाई, this is the docket. एक काम करना, हैबिट डाल लो अभी, जिनका तो बेस्ट कॉल है, जो भी कॉल आती है तुम्हारी IIMs की, किसी भी कॉलेज की, फटाफट डैशबोर्ड पे जाना है एंड पिक अप दीज डॉकेट्स. टुडे आई एम गोना स्पीड रीड थ्रू दिस, and you have to tell me in the comment section whether you are ready or not ready for such an interview. Okay, so imagine that you are sitting on the other side and I'm the panelist. I'm just going to read the questions और पढ़ने के बाद टाइप करना चैट के अंदर, are you ready for such inputs or not, because this is I'm Indore for you. ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई. I picked up one or two. I'm going to interview experience 19. I'm Indore, PGP HM, non-engineer, fresher, female, 998, 15 March 2022. Panelists both seem to be fair in their mid 40s. Okay, I entered the room, exchanged greetings with them. They didn't ask me to sit. Okay, sir, may I sit? Very good question. यही पूछना जरूरी है. खड़े हो तो ऐसे करके awkward smile रखना, पूछना sir, can I sit? May I sit? Yes, please. It's for you only. So where are you from? I'm from Lucknow. Tell me about yourself in short. बहुत बढ़िया. So तीन आंसर्स रेडी होने चाहिए आप सबके. आपको बताया हुआ, एक 1 मिनट का, एक 1.5 मिनट का, और विच कैन गो टू अप्रोक्सीमेटली 3 minutes एज वेल. ताकि पैनलिस्ट ने अगर आपको रोका ही नहीं और बताओ और कर रहा है तो बताओ, हमने तो रेडी रखा. मतलब तुम अपना 1 minute वाला टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, शॉर्ट इंट्रोडक्शन दोगे. आगे, यू कंप्लीटेड ग्रेजुएशन फ्रॉम सर यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, विच लखनऊ इटसेल्फ. ओके, यूनिवर्सिटी इटसेल्फ, ग्रेट. व्हेन डिड यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन? 2021 नवंबर. सर एक्चुअली ड्यू टू कोविड नवंबर लेट हो गया, कोविड के कारण लेट हो गया. व्हाट आर फील्ड्स ऑफ इंटरेस्ट? नाउ इट्स गोना गेट ट्रिकी हियर. सर जनरल मैनेजमेंट और मार्केटिंग. वेरी गुड, उसने दो चीजें दे दी, बहुत ही बढ़िया. अगर आप मैं एक कल की क्लास में कौन कौन था भाई? मैंने एक पेप्सी को और कोक का एग्जांपल दिया था शायद क्लास में, कोई था तुम में से? हाँ भाई, पेप्सी वर्सेस कोक वाला तुम्हें दिया था ना मैंने. आई एम नॉट श्योर कहाँ बोला था ये. ठीक है भाई, हाँ तुम्हें तो बताया था. कोई था जीडीपी क्लास के अंदर मेरे सेशन के अंदर? यस और नो? यस नो तो करो, चैट लिखो भाई, चैट के अंदर यस नो करो. ओके, पेप्सी वाला एग्जांपल दिया था मैंने. हाँ भाई. ओके, कॉफी टॉफी वाला बताया था, बहुत ही बढ़िया, गुड गुड, यस सर यस. तो पेप्सी पेप्सी वाला एग्जांपल क्या था, जिनको नहीं याद है, जो नहीं थे सेशन के अंदर, तो भाई एक वेंडिंग मशीन थी एयरपोर्ट के अंदर, कोका कोला की उसकी सेल ड्रॉप पे ड्रॉप हो रही थी. 20% पीपल और पासिंग बाय आर गेटिंग कोक फ्रॉम द
वेंडिंग मशीन एट दैट टाइम, समर का टाइम है, 20% लोग ही, तो 10 लोग निकलते हैं, 2 खरीदते हैं, कंसल्टेंट आया, क्या करो साथ में पेप्सी का स्टोर लगा दो, पेप्सी का एक और वेंडिंग मशीन लगा दो। इसका फायदा क्या हुआ कि द कन्वर्जन रेशियो वेंट अप, कोका कोला की भी कन्वर्जन रेशियो 20 से 50% हो गई, और पेप्सी भी लोग पीना शुरू कर दिया, और 20% लोगों ने पेप्सी भी चूज किया अप्रोक्सीमेटली। सो द एजेंडा वाज व्हेन देयर इज ओनली वन चॉइस, पीपल टेंड टू चूज बिटवीन क्या मुझे कोक पीनी है कि नहीं। पर जब दो चॉइस हो जाती हैं तो दोनों में से एक ही बंदा चूज करता है। अगर तुम चाहते हो थोड़ी और मेहनत लगेगी, इफ यू गाइस कैन पिक अप 2 सब्जेक्ट्स, ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ कि सर व्हाट इज फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जनरल मैनेजमेंट या मार्केटिंग, 2 बोल सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। रादर देन सेइंग अच्छा ये तो तुमने पढ़ ही लिया होगा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दिस पर्सन इज गेटिंग। सपोज इफ आई ओपन Amazon, I don't know why he said Amazon to order some pizza. Then if I use some other app, it shows me pictures of pizza pasta. What is this algorithm called? Sir, I don't know the digital marketing, social media marketing, but I'm sure. I'm sorry, I don't know the name. Okay, no issues. You're shortlisted for PGP and PGP HR. What's your preference? My interest is more inclined towards the PGP and then PGPM HR. Why so? Sir, as a fresher, I like to explore. तो be ready. अगर आपको choice दी जा रही है कौन से भी कॉलेज के लिए, why so पूछेंगे। Are you familiar with the curriculum? Yes, sir. फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट उसने जनमैन के सब्जेक्ट बताए सारे के सारे, और सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन होती है। रट्टा मार लीजिएगा, IIM इंदौर के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर क्या सब्जेक्ट होता है, सेकंड सेमेस्टर अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, वो देख लेना। सो यू फॉलो इन HR मैनेजमेंट बिजनेस? नो सर, सॉरी, नो इश्यूज। यू नो द बेसिक्स ऑफ HRM? यस सर। व्हाट्स द वर्क डन बाय HR? ठीक है सर, द HRM इज कंसर्न फाइंडिंग द राइट कैंडिडेट एक्सेट्रा। नाउ दिस इज नॉट द बेस्ट आंसर, बट ठीक है, इट इज जस्ट वन पार्ट ऑफ HR, बट शी इज ऑल्सो एडेड दिस पर्सन के बाई मेकिंग सैलरी स्लिप ऑफ एम्प्लॉय, गिविंग रिवॉर्ड्स एंड रेम्युनरेशन। नाउ दिस इज ओनली द रिक्रूटमेंट पार्ट ऑफ HR, पर HR के बहुत सारे काम रहते हैं, और रिक्रूटमेंट और वो फन वाले जो हम उनकी टांग खींचते हैं, रंगोली बनाने का काम रहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मोर देन दैट इट ऑल्सो हायरिंग, ये कॉम्पनसेशन बेनिफिट के अंदर आता है, बट देयर मच मोर थिंग्स व्हाट एन HR डूज, सोर्सिंग, आउटसोर्सिंग, नाउअडेज HR आर कॉल्ड business HR, जिनकी HR की कॉलेज थोड़ी पढ़ लेना। Only these tasks done by them, sir. Only aware. There are several tasks done by them. Okay, what did you learn in the past few years? Told them about the initiative I'll be heading, POR सब बता दिया उसने। Aren't you too work for an NGO? No sir, there is no limit। बहुत बढ़िया। All the young folks, मैंने क्लास में बताया हुआ है कि they will tell you that are you too young to do an MBA? That's like a no brainer. If they ask you this question, you look very nice, you look very cute, you look very charming, you're a 20-year-old, शक्ल पे बेबी फेस है, तो भाई आपको क्वेश्चन पूछेंगे, एनजीओ नहीं, ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आर यू फिट फॉर एन एमबीए? नो सर, देयर इज एन एज लिमिट ऑफ बेटरमेंट। आर यू गुड इन मैथ्स? बहुत बढ़िया, मैथ्स का क्वेश्चन सही बताया इन्होंने कि भाई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ लेना। हाउ डू मैनेज थिंग्स एंड सब्जेक्ट्स रिक्वायरिंग द क्वांट्स? तो भाई इसने बोल दिया आई एम नॉट गुड, ये थोड़ा सा स्केरी है। तो यू कैन से सर आई एम गुड विद मैथ, आई एम डिसेंट विद 1 or 2 सब्जेक्ट्स। हमेशा उसको 2 सब्जेक्ट बोल दो, सर आई एम ओके विद अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक, राइट? जेनरिक बातें, ज्ञान मत फैलाना, वेरी गुड विद एनालिटिकल पजल्स until unless you don't have great analytical puzzles, because if I am a panelist, when I do an hiring, I'll only ask those questions जहाँ पे मुझे पता है तुम अटकोगे। थोड़ा ध्यान से। I was topper of the 6th semester, mathematical modeling etc. What subjects have you studied in your graduation? Principle of management, managerial economics, few more subjects like advertising. Now this is death, हाँ this is death। थोड़ा ध्यान से सारे सब्जेक्ट बोल दिए तो भाई इसके अंदर वो मे बी उसका फेवरेट 1 है, फेवरेट 2 है, फेवरेट 3rd है। ये एडवर्टाइजिंग सेल्स के अंदर, मतलब मैं अगर स्मार्ट पैनलिस्ट हूं, आई जस्ट पिक अप ऑन दिस एंड डू इट, बट ही ऑल्सो गेट्स कंफ्यूज विद सो मेनी ऑप्शन एंड ही मूव टू। तो भाई एडवर्ट उसने 3rd ही पूछा। इफ यू द ओनर ऑफ द B2B फर्म, व्हिच मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग कैन बी ओरल, रिटन, बहुत जेनरिक आंसर्स हैं, आर काइंड ऑफ आइडेंटिड आउट, सो आई वुड सजेस्ट गोइंग विद द डिजिटल आंसर, डिजिटल एड्स एक्सेट्रा। ये 2023 का है, तो अभी तो AI, चैट जीपीटी, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO भी तुम बोल सकते हो। सर कैन यू प्रोवाइड इन शॉर्ट इंसेंटिव फॉर सेल्स प्रमोशन? हाउ डू यू अट्रैक्ट द कस्टमर्स? तो सेल्स की बात कर रहा है, लकी ड्रॉज, मैनेजर इकोनॉमिक्स एज वेल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट पैनल 2 टू पैनल 1? नाउ गुड कॉप बैड कॉप, आई थिंक चिरंजीव भी बोल रहा था गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, तो एक बंदा दूसरे को बोलता है। कल या परसों IIM कैलकाटा का सेशन था, तो उसके अंदर वो याद दिला रहा है कि भाई इस मैडम को ना, मैडम, पैनलिस्ट 1 मैम को बोल रहा है, पैनलिस्ट 2 जो फीमेल है, कि मैम वो तुम्हारा मैथ्स वाला जो फेवरेट क्वेश्चन है जो तुम पूछते हो वो वाला पूछो इसको, ही इज वेरी गुड इन मैथ्स। तो पैनलिस्ट कैन आल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स बिकॉज दे आर स्पेंडिंग द एंटायर डे इन डे आउट विद यू गाइस। प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, रेंज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है,
रिलेशनशिप बिटवीन प्लास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, पॉजिटिव क्या होता है, वाई सर फॉर एग्जांपल, फिर एग्जांपल दे रहे हैं, व्हाट फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स हैव यू स्टडीड, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे चल रहा है। माइक्रो मैक्रो किस में आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन इंटरप्ट बिटवीन, हाउ कैन यू से सो, वन इज एन assumption, तो परफेक्ट मार्केट कभी नहीं होता है। तो फिर उसने एग्जांपल दिया, ओके वाई सर, बिकॉज एन एग्जांपल ऑफ बीइंग कंज्यूमर। ये टिपिकल नॉन इंजीनियर्स तुम्हारा इंटरव्यूज ऐसे ही जाने वाले हैं जैसे ये जा रहा है। सो डू यू नो करंट अफेयर्स, आई नॉटेड, सो टेल मी समथिंग अबाउट अपार्ट फ्रॉम रशिया, यूक्रेन, एसआईवी एंड G20। वेरी गुड, स्मार्ट पैनलिस्ट, ये तीनों छोड़ के कुछ और बता। तो बजट तो तुम सब पढ़ लोगे, बट बजट आज के अराउंड एज आई टोल्ड इन द क्लास एज वेल, 15 फेब के बाद बजट डेड हो जाता है एंड दे कैन गो एनीथिंग। सो कीप मेक श्योर कि तुम्हारे 5-6 चीजें रेडी। व्हाट अबाउट इट, व्हाट्स हैपनिंग, खालिस्तान मूवमेंट के बारे में उसने, भिंडरा वाले के बारे में उन्होंने बात बताई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डू यू नो द मिनिस्टर, सर आई नो द CM, फ्यू मोर काउंसिल मिनिस्टर। बहुत बढ़िया, ये भी आपको अपडेट किया गया था। रीड मोर अबाउट योर होम टाउन, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, लास्ट नेम क्या है, पूरा नाम क्या है, आपसे कुछ लिंक है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, अभी भी एजुकेशन मिनिस्टर वही है, उनका टेन्योर आगे बढ़ चुका है। वाजिद अली शाह कौन है, ही इज द लास्ट नवाब ऑफ लखनऊ बिकॉज ये लखनऊ से हैं। व्हेन डिड ही डाई, सॉरी सर आई डोंट नो। डू यू नो ही इज अ म्यूजिशियन, ही वाज अ म्यूजिशियन, नो सर। Looks at me poker face, you don't know, question mark. No sir, I didn't know, I will look up for the interview. So after the interview we'll give you topic 30 seconds and you have to speak about it. So first panel 100% not prepared for extemper, but I composed myself and nodded. तो पहला पैनल था उसका तो पता नहीं था। तो any which ways you can use, so you guys can read through that, but overall interview इसका अच्छा गया था and I think this girl made it। तो मैंने पूरा इंटरव्यू आपके लिए पढ़ के बता दिया। तो हाँ भाई, ऑन द चैट, आर यू गाइस रेडी, यस और नो, आर यू गाइस रेडी, यस और नो? हाँ भाई, प्राइमरली नॉन इंजीनियर्स, इंजीनियर्स तो नो ही बोलना, जितना इकोनॉमिक्स उन्होंने बोला है तो वो तो तुम्हें नहीं, प्रोनाउन नॉट रेडी, फील फ्री, यस नो यस नो यस नो। All right, super. Yes. No. So this is the depth which they're going to cover in the 45 minutes of time. Chiranjeevi or the CATKing family seniors, Gaurav, Abhishek, would you like to add something which is very important and crucial for them? Admin एक बार लाइव बंद कर दीजिए and current affair पढ़ना है सर की people. Okay, good. तो ये तुम्हारे लिए समरी है, know about yourself, structure your answer, HROB वाले आंसर्स तुम YMB एक्सेट्रा मैं करवा दूंगा इन द कमिंग फ्राइडे सेशन एंड द नेक्स्ट 2 सेशन। अगले 3 सेशन के अंदर यू विल बी सॉर्टेड विद स्ट्रेंथ वीकनेस, ये दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, तुम्हारे सीनियर्स कैटकिंग फैमिली सब यहीं पे हैं। तो नेवरदलेस वो तो सब हो जाएंगे, बट ये तुम्हें खुद प्रिपेयर करने